So hello everyone, this is Ritika और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में वी गॉट टू नो कि लीड कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो हम एक्सप्लोर करेंगे डील्स मॉड्यूल बिकॉज किसी भी सीआरएम में जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं दे आर लीड्स और डील्स। सो वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट लीड्स। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। लीड सेक्शन में जाएंगे, ओपन द लीड इनबॉक्स। If you want to create any lead, आपको कोई भी lead create करनी है, just click on plus lead button, put all the details, click on save. Import करने के लिए just click on import. You can import any data जहाँ कहीं भी आपके पास है, Excel or whatever, anywhere you have, you can just import the data from here. And if you want to customize anything, just click on settings, choose options or remove options, click on save. If you want to choose the default, आप डिफॉल्ट पे क्लिक करके जिसका डिफॉल्ट है उसको भी सेट कर सकते हो। हेयर यू कैन सी द लेबल्स हॉट वार्म और कोल्ड टू गेट फिल्टर, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े एंड यू कैन इजीली सी द लीड्स। एंड लेट्स गो टू डील्स नाउ। सो दिस इज द डील मॉड्यूल। हेयर यू कैन सी ऑल द डील्स। यहाँ पे आपको सारी डील्स दिख जाएंगी, filtered out by other and other stages. Let's see. The first stage is qualified, and the second stage is contact mode, then demo scheduled, proposal made, negotiation started. So let's see if you have any lead, कोई भी lead है which is उसके ऊपर अभी कोई भी कॉल नहीं करी गई है, just qualified. तो it should be into the qualified stage. अगर कोई lead है and the call has been made, maybe you done like you had been contacted with them, then you have to put it into the contact made. देन अगर उस लीड पे आपका डेमो स्केड्यूल हो चुका है फॉर एनी डेट और मे बी फॉर नेक्स्ट मंथ और आफ्टर 1 वीक, देन इट शुड बी इनटू द डेमो स्केड्यूल। और अगर किसी भी लीड पर ऑलरेडी डेमो हो चुका है, प्रपोजल मेड हो चुका है, देन इट शुड बी इनटू दिस अंडर दिस। If proposal has already been made, demo भी हो चुका है, and now the pricing and negotiation is in between you and the customer, then it should be here. And then after that, you close the deal. So again, if you want to create a deal, आपके पास कोई lead है which you want to convert, you can just convert it from the lead section. And maybe you have a data which you want to enter जो यहाँ पे आपको put करना है और कोई भी deal create करनी है, then just click on, it's so easy। जैसे हमने लीड क्रिएट करी थी सेम वैसे ही हम डील क्रिएट करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन प्लस डील and now it will ask you to put some details. Contact person should be organization, and then कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। देन ये आपसे पाइपलाइन स्टेज के लिए पूछेगा विच आई जस्ट मेंशन। तो अभी लेट मी पुट लाइक कॉन्टेक्ट मेड, ओके। लेबल्स, लेबल्स आप कुछ भी अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो सो दैट यू आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एनीथिंग लाइक इट शुड बी अर्जेंट और आई वुड से लेबल शुड बी लाइक सेल, okay, and then you can just add the label, add any color, and then you can just click on this. It is added. Expected close date, कोई आप किसी एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो या फिर अपने लिए कर रहे हो एंड यू वांट कि ये डील इस डेट तक क्लोज हो जाए, which means the due date. So you can just choose anything. I will choose like 23, okay. And then if you want to skip it, just skip it. For number, any, oh, it should be numbers. Email address xyz@gmail.com, and then you should be put on save. And then here you can see this lead in here under the contact made. Or if you want to just
get it from there to there. No need to just click on here and then click on there. You can just easily do that. Let me show you. You can just easily click here, scroll it to the here. If you want to get it there, just scroll it to here. See how easy it is. If you want to create a lead, like कोई भी lead create करनी है जिसके लिए demo schedule हुआ है, मे बी वो लीड आपके डेटा में है ही नहीं और अभी हमें डायरेक्टली उसे डेमो स्केड्यूल के नीचे एंटर करना है. सो जस्ट गो देयर, क्लिक ऑन प्लस, put all the details. I would say Gibby. Gibby's, just put all the details and then click on save. Sorted. और सो हमने देख लिया ये लीड्स कैसे क्रिएट करते हैं, लीड्स के स्टेजेस कैसे फिल आउट करते हैं. हियर आर सम ऑप्शंस. यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगी डील की. यू कैन आर्काइव एनी डील विच यू डोंट वांट टू सी. Forecast, here you can see the pipeline as I mentioned, like these are the things. ये हमें दिख रहे हैं stages, ठीक है. मे बी हम कोई और स्टेज ऐड करना चाहते हैं इसमें, या फिर हम प्रपोजल मेड नहीं देखना चाहते हैं. हम डायरेक्ट डेमो स्केड्यूल के बाद वी जस्ट वांट टू सी नेगोशिएशन स्टार्टेड. So we can just click here, drop down menu, go to the customize deal cards, and from here you can always add anything or remove anything, and then just click on save. Or maybe like when you click on a, okay, let me show you. Just click on this deal, and here you can see a lot of details like source, person detail, organization, products. And you don't want to see the products content here. You can just go there, pipeline, remove the product, and it will be removed from here. And here, when after clicking आप जब deal पे click करोगे, you can see all the activities. क्या calls करी गई हैं, क्या messages करे गए हैं, क्या notes हैं, meeting scheduler. You can always schedule a meeting, calls, emails. You can upload a file, documents, invoice, and everything. And this is the one if you closed it. This is the lost if you lost that deal. And then there is a projects. यहाँ पे आपको सारे projects दिख जाएंगे, और अगर आपको अपना कोई project create करना है, just go there and create it. Campaigns. See what campaign is. Campaign is for the email marketing. When you click on the get started for free, campaign will help you to create a good email to send to your leads, and then nurture your contacts, which means when you send a good email or message to all your leads, it will definitely help you. Then best campaign performance, like it will help you to create some emails and everything. And then inbox, यहाँ पे आपको सारे emails, drafts, outbox, sent and archive दिख जाएंगे. Then you can see all the contacts here. Here you can see जो भी all the peoples, and if you want to create any contact, just click on plus person, put out all the details like name, organization, phone number, email, and click on save, and then it should be done. Here you can see all the organizations, same as people. Just click on here, put down some details, click on save. See how easy it is. If you want to delete anything, you can just always click here and bulk edit. You can delete it. Or if you want to import the data, you can import the data from here. If you want, like if you have a lot of data and you think that here are some duplicates, contacts, or organizations, you can always merge them. You can also export the data, and then you can see insights from there, all the products you have, marketplace, and then many more. I hope that works for you. Thank you.